In today's lecture, we'll discuss all the terminologies used in heredity and evolution chapter. To be precise, we'll discuss 27 definitions. Let's take our first definition, that is the word genetics. So we all know, genetics is a branch of biology and it deals with the terms heredity and variation. So under genetics, we study how offspring gets inheritance from their parents and what is responsible for that. जो word genetics है बेटा, this is derived from the word genes, है ना. तो genes we all know, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम made up of DNA and part of DNA is what we call gene, which gives particular character. It gives either the color of eyes or is responsible for color of hair. So these features are being guided by genes. तो इसमें जेनेटिक्स में भी स्टडी कि जीन्स जो है वो कैसे वेरी करते हैं एंड हाउ दे आर कैरीड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. मॉडर्न जो आपका जेनेटिक्स है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर मेंडल and the father of modern genetics, that's William Batson. He is the one who coined the term genetics. So let's discuss these two terms, heredity and variation, in detail. Heredity is passing of genetic traits. तो जो पेरेंट्स के जीन्स के जो ट्रेट्स हैं, कोडिंग है, दैट इज बीइंग पास्ड टू द ऑफस्प्रिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. बेसिकली you are inheriting the genes from the parents, and this inheritance is in both the cases, whether it's sexual reproduction or asexual reproduction, right? This heredity is what is explaining that why a particular offspring resembles their parents so much, and sometimes the offspring resembles their grandparents, or their maternal uncles. So that all is explained by heredity, and this will see how these genetic traits once passed in the offspring are guiding the features of the offspring. Let's take the third definition, third word, that is offspring. So it's an easy one. We know offspring is nothing but the young ones which are being produced by either sexual or asexual reproduction, right? The traits, all the genetic traits, they are being passed from parents to offspring. So we'll see which are those traits. Traits means features which can be passed from parents to offsprings. Character means the features which can be passed, right, to an offspring. तो बेटा अगर किसी को स्मोकिंग की हैबिट है तो स्मोकिंग हैबिट cannot be passed to the offspring, so that is not in character, right? What can be passed is few genetic disease can be passed, or basically if person has got brown hair or blue eyes, right? These characters, these features which can be passed from to an offspring, all those features are called as character. This can be distinguished in two parts, that is, one is the heritable structural features. So जब हम structural features की बात कर रहे हैं तो basically the look is what we are talking about. So whether it is shape and color of a seed, so if it's green color seed or it's a round seed or if a tall organism is there, all these features through heredity can be passed into the offspring. तो इन features को जो है we call them as character, right? तो अगर हम shape of seeds की बात करें, it can be round or wrinkled. तो यहाँ पर ये जो shape of seeds है, that is what we call as character. और उस पर्टिकुलर करेक्टर में जो ट्रेट्स हैं
that can be, its seed can be round, wrinkled, or cubical, cylindrical, you know, different traits can be possible. In this particular case, only two traits are there, that is either seed can be round or wrinkled, but the character is, we are talking about the shape of the seed. In the same way, the character will be color of the seeds or color of the pod. These are the structural feature or characters for seed. Now we can also go for the functional features, है ना. functional features का मतलब है कि particular thing can do some function, not only the look but how they can function. So thumb bending now, or tongue flexibility, tongue rolling, these are the characters, है ना. उस characters में जो traits होंगे, है ना, those traits will be tongue can be rolled, tongue cannot be rolled, those will be the traits, है ना. For thumb bending the traits are, so thumb bending is a feature, है ना. ये feature बेटा, this is transferred from parents to offspring, है ना. this is part of heredity, you acquire it from your parents, it's not you are getting it from the environment, है ना. आप प्रैक्टिस करके अपना थंब जो है वो बैकवर्ड बेंड नहीं कर सकते, है ना. दिस बैकवर्ड बेंडिंग थंब इज कॉल्ड एज हिच हाइकर थंब. इट्स बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. So next is the word trait, है ना. We had just discussed this. So trait is किसी भी character में different expressions जो possible है, that's called as traits for that particular character. तो just now we discussed कि भाई अगर हम shape of seed की बात करेंगे, that's character, and possibilities in that, that is traits are there. It can be round or wrinkled, right. For pea plant अगर हम कलर की बात कर रहे हैं, फ्लावर के कलर की, so that is a character is there which can be passed from parents to the genes. This is decided by the genes, and in that character the possibilities are only two, either the flower is going to be purple or white. So these traits can be more for any particular character, right. So for character of height, of course we have got tallness and dwarfness, those are the traits. And sometimes the character is being governed by not only two genes or not only one gene, by multiple of genes, and then it can lead to multiple traits. Same goes with height, right. In case of height you can have multiple traits are possible. For skin color multiple traits are possible, it's whitish color, dark, white, brown, light brown, so a lot of traits are possible. So traits can be broadly divided into two categories. This can be either inherited traits which you are acquiring from your parents, or acquired traits. So acquired traits का मतलब है which you are basically getting from the environment. If you are getting the skin tattooed, you are making the skin dark, that's an acquired trait. It will not pass into the offspring. कि बेबी जो है वो टैटू के साथ पैदा हो रहा है या डार्क कलर हैंड के साथ पैदा हो रहा है ना. एंड दिस ट्रेट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू आइदर एज डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, है ना. ये आगे जाकर थोड़ा डिटेल में देखेंगे. डोमिनेंट मीन्स अ ट्रेट जो दूसरे के ऊपर हावी है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करेक्टर शेप ऑफ सीड है, उसमें ट्रेट्स आर राउंड एंड रिंकल्ड, है ना. तो इफ राउंड ट्रेट इज डोमिनेंट ओवर रिंकल ट्रेट, तो अगर आपको जो है पेरेंट से, फादर से राउंड ट्रेट मिल रहा है एंड मदर से रिंकल ट्रेट मिल रहा है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगी दैट विल फॉलो द डोमिनेंट ट्रेट और द सीड्स विल बी राउंड. ठीक है. इफ योर let's say father is tall and mother is dwarf, so tallness is a dominant trait, dwarfness is a recessive trait, so the person will take the dominant trait, that is the tallness. Let's see these two traits again, that is inherited traits and acquired traits. So we have discussed it already, you can copy these definitions. So traits which are transmitted from the parents to the offspring, right, that's because of heredity.
These traits which can be passed, these traits are called as inherited traits. So this includes your skin color or color of eyes or the features, right? These all are inherited from parents to offspring. But अगर हम बात करें smoking habit, drinking habit, these are not inherited traits, those are acquired traits. You are acquiring it from the environment. You don't pass it to the offspring genetically. So traits which are developed because of interaction in their environment, those are called as inherited traits, right? So if lady has got pierced ear, then the offspring will not have pierced ears because that's not governed genetically. So inherited traits include, now this ear lobes, if you will see, so in this is your detached and this is attached ear lobes. So these ear lobes are your inherited traits. So you acquire it from your parents. Acquired traits, we have already discussed, you don't get it from the genes, but you acquire it from the environment. Okay, let's discuss dominant trait and acquired trait, है ना? तो बेटा आप जो traits हैं ना, those traits you get from your parents. और अगर दोनों के जो features हैं वो different है ना, father has got blue eyes, mother has got black eye, तो basically both of them at gene level are sending signal to the offspring. उन दोनों में से एक ट्रेट है ना वो डोमिनेंट होगा. ऐसा नहीं होगा कि ब्लू और ब्लैक मिक्स होकर जो है कुछ लाइट डार्क ब्लू कलर की आईज का कलर हो जाएगा, नहीं. सो इट इज वन पर्टिकुलर ट्रेट विच विल बी डोमिनेंट ओवर द अदर. तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो एवरी वन विल हैव ब्लू आईज, है ना. दैट्स ब्लू कलर इज द डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है. सो व्हेन अ ट्रेट हैज टू डिफरेंट फॉर्म्स एट जीन लेवल, टू डिफरेंट फॉर्म कहां से आ रही है? फ्रॉम द पेरेंट्स. तो अगर दो डिफरेंट फॉर्म्स आ रही हैं एट जीन लेवल, देन द ट्रेट विच इज सीन विजुअली, है ना, जो ट्रेट ऑर्गेनिजम्स ने ऑफस्प्रिंग ने एक्वायर किया है, दैट ट्रेट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है. इसी को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में देखेंगे, दूसरे वर्ड्स में देखेंगे, सो डोमिनेंट ट्रेट इज वन दैट इज phenotypically expressed in heterozygote. तो ये जो दो वर्ड हैं ये हम आगे जाकर डिफाइन करेंगे. बट फिनोटिपिकली क्या है? लेमन टर्म में इट इज जो विजुअली दिख रहा है ना. एक है जो जीन्स में एक्वायर किया है और उन जीन्स की वजह से जो विजुअली आपको ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज फिनोटिपिकली. एंड हेट्रोजाइगोट इज जब पेरेंट्स से आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स मिल रहे हैं, दैट इज हेट्रोजाइगोट. तो डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन केस ऑफ हेट्रोजाइगोट, कि जहां पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स मिल रही हैं आपको, राइट. सो इन केस ऑफ अ ब्राउन आईज फ्रॉम मदर, green eyes from father, so both of them wants to guide, right? Mother says okay you should have brown eyes, and father genes are saying no you should have green eyes. So among these, whichever is dominant, one of them will be dominant and the offspring will get that particular color of the. Okay, dominant हमने define किया. Let's define the recessive trait. So a trait which has got two different forms at the gene level. तो उन टू डिफरेंट फॉर्म्स में जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दैट इज डोमिनेंट, एंड द वन विच विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट पर्टिकुलर ट्रेट विल बी कॉल्ड एज रिसेसिव ट्रेट. सो द ट्रेट दैट इज प्रेजेंट एट जीन लेवल बट इज मास्क्ड and does not show itself is called as recessive trait, right? Let's see few of the traits which is dominant and recessive. In this particular case, if you'll see the hairline, so here the hairline is taking the V shape, this is called widow's peak, and here this the hairline is flat, this is no widow's peak.
So widow's peak is a dominant. So if you are getting widow's peak genes from one of the parents, then whether the other parents has got widow's peak or not, the offspring will have widow's peak. Okay, depending on which genes are being transferred in the offspring. Let's take few other traits. So the rolling of the tongue, that's a dominant trait, right? If both are present at the gene level, then the offspring will be able to roll the tongue. Earlobes we have already discussed. Free earlobes is the dominant trait over attached earlobes. Hand clasping, this is an interesting one. So it says that if you will hold your hands, right, in the form of a prayer, if you put your hands together, then you will, it's if your left thumb is on the top, then it will always be, if you are clasping your hand, left thumb will be on the top. If you will try to put it other way, right on the top, you will feel your hands are in uncomfortable position, right? और जिनका हाथ जो है when they are clasping, जिनका राइट थंब ऊपर आता है तो उनका हमेशा राइट थंब ही ऊपर आएगा, लेफ्ट थंब ऊपर में they'll feel uncomfortable. And which is dominant? The left on top is dominant. तो अगर दोनों ट्रेट अलग अलग हैं मदर और फादर के, तो जिसका जो लेफ्ट ऑन टॉप है वो वाला ट्रेट जो विल बी विनर, एंड द ऑफस्प्रिंग विल आल्सो पुट लेफ्ट ऑन टॉप. So this is in case of pea plant. These are the characters on the top, and here are the traits are there. So the traits which are on the top are dominant traits, and at the bottom these are recessive traits, right? This we'll discuss in detail when we are talking about the Mendel's experiment. So let's move ahead. So before we take on the other definitions of alleles and other things, we should know few basic things. So here these are the 23 chromosomes are there. तो इन chromosomes में बेटा ये जो आपके pair of chromosomes हैं, है ना? तो this pair of chromosomes, one you receive from your father, another from your mother, और ये chromosomes जो हैं ये particular, मतलब these are identical to each other in terms of the function. कि भाई नंबर 1 में अगर फादर वाले में जो है इट्स गाइडिंग 10 डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो मदर वाला भी एग्जैक्टली सेम 10 कैरेक्टर्स को गाइड कर रहा होगा, है ना? फर्क कहाँ होगा कि जहाँ पर फादर वाले में जो जीन्स है वो बोल रहा है आपके ब्राउन हेयर हो, मदर वाली का भी जीन्स यहीं पर एग्जैक्टली इसी पोजीशन पर, इट विल से यू हैव ब्लैक हेयर. तो जो भी जीन्स डोमिनेंट होगा तो ऑफस्प्रिंग का वो वाले कलर के हेयर हो जाएंगे. So this pair of chromosome which you get, one from your father, one from mother, this pair is called as homologous pair because they have got genes which are guiding the exact same function. Only thing is the message they are passing is different. One is saying to have hitchhiker's thumb, another is saying to have straight thumb. So winner will be the dominant one, that is hitchhiker. So these homologous chromosomes, these are written like this, right? This you will see, where the genetic reports are there. Now these chromosomes will decode slowly, right? So this capital A, small a, these are the letters for the genes. So each chromosomes usually have somewhere between 18 to 20,000 genes. यहाँ पर जो दिखाए हैं बेटा, these are the 6 genes which are being shown, right? These genes with in the same homologous chromosomes, these are also called alleles. Alleles of gene A means what are the different forms of genes are there. Here the alleles are different. In this BB the alleles are same. Gene loci और locus, तो ये क्रोमोसोम में पर्टिकुलर जीन की जो पोजीशन है उसको हम लोकस बोलते हैं, ठीक है? जीन्स अगर बेटा ये आपका सेम हो जाते हैं, वी कॉल देम एज होमोजाइगस, कि ये सेम ट्रेड को कर रहे हैं, है ना? फादर कह रहे हैं ब्राउन हेयर, मदर भी कह रही है ब्राउन हेयर, बात खत्म, दिस इज होमोजाइगस.
हेट्रोजाइगस जहां पर एलील्स जो हैं वो डिफरेंट मैसेज कैरी कर रहे हैं, ठीक है। सो मदर इज सेइंग रोलिंग टंग, फादर इज सेइंग नॉन रोलिंग टंग। तो जो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्मॉल होता है उसको, जो रिसेसिव होता है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पर दोनों के दोनों जो है रिसेसिव हैं, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव एलील पेयर। होमोजाइगस बिकॉज दीज आर सेम, recessive because both of them are recessive. Allele is different genes together, these are called as allele pair, right? Now let's define the terms allele, homozygous, heterozygous. Let's take the term allele first. So allele is nothing but various forms of genes at particular position और locus, है ना। जो आपके होमोजाइगस क्रोमोसोम्स हैं उसमें जीन्स कितने टाइप के जो अवेलेबल हैं विद सेम फंक्शन, ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज एलील। तो यूजुअली दीज आर एलील्स आर हैविंग टू फॉर्म्स ऑफ जीन्स, या तो दोनों सेम होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो जो आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है बेटा उसमें देयर विल बी टू एलील्स विल बी देयर, बट फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर देयर, है ना, जैसे फ्यू प्लांट्स आर देयर विच आर हैविंग मल्टीपल एलील्स आर देयर, ठीक है। बट मोस्टली देयर आर टू एलील्स आर देयर विच आर एक्सप्रेसिंग द सेम ट्रेट्स। इन एलील को हम आगे जो है विल बी एक्सप्रेसिंग देम विद अल्फाबेट्स, और जो कैपिटल अल्फाबेट है दैट इज शोइंग डोमिनेंट एलील, स्मॉल अल्फाबेट दैट शोज रिसेसिव एलील, ठीक है। सो अगर आप ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज लोकस, एंड किसी पर्टिकुलर पोजीशन में जो जीन्स हैं वो सेम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं। यहां पर जो है दिस जीन्स वी आर कॉलिंग देम एज एलील, तो दिस इज एन एलील ऑफ व्हाइट फ्लावर, हियर इट्स शोइंग एलील ऑफ पर्पल फ्लावर, both are representing same character, that is color of the flower, only thing is the alleles are different, so one is saying white color, one is saying purple color, whichever is dominant the flower will have same color, and this position is what we call as locus. तो बेटा एक बार लोकस भी डिफाइन कर लेते हैं, है ना। लोकस इज basically the spot or address or position of a allele or genes, ठीक है, on a chromosome। तो कोई भी एलील या जीन, पर्टिकुलर एलील और जीन की जो पोजीशन है क्रोमोसोम पर, उस पोजीशन को हम लोकस कहते हैं, है ना। और ये जो लोकस की पोजीशन है ये हर स्पीशीज, मतलब स्पीशीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में सेम होगी। मतलब मान लो हमने जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखे थे उसमें फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ऊपर में, सबसे ऊपर में जो है आपका जो जीन्स है वो कलर हेयर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हर ह्यूमन काइंड में फर्स्ट जो आपका क्रोमोसोम है उसमें जो टॉप वाला पार्ट है, और जो लोकस है, लोकस क्या हो गया कि फर्स्ट क्रोमोसोम का जो टॉप पार्ट है, so that particular locus will have gene defining the color of hair, ठीक है। So what is gene? It is a spot or location or address on a chromosome at which a gene for a particular trait is located in all members of species, हर मेंबर में होगा exactly same position पे, and in both pair of chromosome, मतलब जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें दोनों में एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर वो जीन अवेलेबल होगा, है ना, और उस पोजीशन को भी कॉल इट एज लोकस, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज व्हाट वी कॉल एज लोकस, ठीक है। तो एक बार ये भी डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये लेटर्स जो है वो कैसे यूज कर रहे हैं। सो दिस लेटर्स आर नथिंग बट दीज आर जेनेटिक सिंबल्स आर देयर
or in symbols. So these gene symbols, how we are using this gene symbol, that is each gene is given a symbol and usually a English alphabet and English letter, and the capital letter is what is denoting the dominant trait and the small letter is denoting the recessive trait, right? So when we say the gene is capital T small t, so this is representing tallness and dwarfness. And we have seen this, a dominant gene or trait will win over the recessive trait. Now let's see what is this dominant allele or dominant trait and recessive trait. So we have already discussed in detail, so we just need to note down the definition in words. So dominant allele is an allele which can express itself when present in homozygous और heterozygous. homozygous का मतलब है बेटा कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, तो जो रिप्रेजेंट होगा वो हमेशा कैपिटल टी रिप्रेजेंट होगा बिकॉज दैट्स अ डोमिनेंट एलील. ठीक है. सो लेट्स से इफ ब्लू आइज आर डोमिनेंट, तो blue eyes paired with black eyes, offspring will have blue eyes. Blue eyes paired with blue eyes, offspring will still have blue eyes. Okay, that's what is dominant allele is there. So here in this, if this particular bird is having purple color, the other one is having blue color, and the purple color is the dominant allele, then the offspring will also have dominant allele. Okay? So let's say the offspring has got purple from father and blue from mother. So among this, ऐसा नहीं है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो इन दोनों का मिक्सचर करके कुछ नया कलर पैदा होगा उसमें, नहीं. जो डोमिनेंट होगा वो कलर जो है ऑफस्प्रिंग विल अटेन. लेट्स सी आफ्टर डोमिनेंट एलील विल चेक रिसेसिव एलील. तो रिसेसिव एलील मीन्स विच विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना, जो प्रेजेंट तो है बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर एलील विल बी कॉल्ड एज रिसेसिव एलील. ओके, तो बिफोर वी मूव अहेड वी नीड टू नो फ्यू थिंग्स, है ना. जब हम बात कर रहे हैं टर्म्स जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, तो जीनोटाइप इज basically we are talking about different ways a particular gene can be expressed. तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर डीएनए है, उस डीएनए के जो जीन्स हैं, ठीक है, उस लेवल पर हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स आर देयर. ठीक है, उन जीन्स की वजह से जो डिफरेंट फीचर्स एक्वायर होते हैं, है ना, उनको हम फिनोटाइप बोलते हैं. तो बेसिकली जीन्स की वैरायटी इज जीनोटाइप, और उन जीन्स की वैरायटी की वजह से जो फिजिकल चेंजेस आते हैं दैट इज फिनोटाइप. एंड इट्स द जीनोटाइप विच इज बेसिकली गाइडिंग द फिनोटाइप. अगर जीन्स की कोडिंग ही नहीं है तो पर्टिकुलर वो फीचर्स भी अवेलेबल नहीं होंगे. So here if you will see this capital P है ना, this is representing the different types of genes pair which are there, and इन genes pair की वजह से जो different features बाहर निकल के आ रहे हैं, जो different traits आ रहे हैं, तो कितने different traits आ रहे हैं, those different traits are called as phenotype. तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पर जीनोटाइप तीन हो गए, है ना, कैपिटल पी स्मॉल पी एंड स्मॉल पी. बट फिनोटाइप्स आर ओनली टू, दैट इज पर्पल एंड वाइट. ठीक है, तो विल यूज दिस टर्म्स व्हेन वी आर फाइंडिंग द रेशियोज. नाउ वी नो व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. वी नीड टू नो द proper definition also.
So genotype is gene complement of an individual with regard to one or more characters. तो एक particular character को लेकर कितने different combination of genes are possible, that is what is genotype is there. So for example, if I am taking the character here, let's say for the color of the flower. So color of the flower is guided by the genes, and the different combination of the genes which are available, those becomes your genotype. So different combination possible are capital B, capital B, capital B, small b, and small b, small b. Same like when you talk about probability when you toss a coin. So combinations possible are head tail, head head, and tail tail. Now here, if I'll say that if you get one head, you will always, that person will be winner. And so here whenever the capital B is there, that is the dominant allele is there, and that is the one which will guide the color of the flower. So in this particular case there are three genotype, and when we talk about phenotype, right? So BB, these are making genotype, and the color of the flower, that is the phenotype, that is the outcome which are there, possible outcome, that makes it phenotype. So phenotypes are the observable characteristics of an individual. ठीक है, तो जो एक इंडिविजुअल के जो ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, here the color of flowers are two combinations, so that's a phenotype. Phenotypes can be decided by either a single gene or multiple genes, है ना. कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर हम बात कर रहे हैं लेट्स से कलर ऑफ हेयर्स, तो कलर ऑफ हेयर इज गाइडेड बाय द सिंगल सेट ऑफ जीन. बट व्हेन यू टॉक अबाउट कलर ऑफ स्किन इज गाइडेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 जीन. तो अगर कोई करेक्टर सिंगल जीन गाइड कर रहा है, then it's called single gene trait. Okay, but कोई करेक्टर अगर मल्टीपल जीन्स गाइड कर रहे हैं, then it is called polygenic trait, है ना. मल्टीपल जीन्स की वजह से जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, फिनोटाइप हैं, those will also increase. So as I said कि स्किन कलर इज गाइडेड बाय 3 जीन, तो वो 3 जीन के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, and thus there are different skin colors are there. So from polygenic trait word, we are forming here the word polygenic inheritance. So where a particular inheritance is or character is based on 2 or more genes. So if for example we have taken is the skin color of a human being, so many different combination of skin color is possible because it's a outcome of 3 genes, right? So basically skin color is because of formation of melanin. Now depending on the combination of sets of genes, it will decide how much melanin will be formed and how dark the color of the skin will be. So if you will look at this, now this is the different possible combinations for those 3 genes, and the one which is having capital A, capital B, capital C, that will have genes where the body or the skin will form more melanin, and where small a, small b, small c set of genes are there, the body will form less amount of melanin and it will be fair. Let's see our chromosomes again. So we have discussed in this about the alleles, that's the different sets of genes, the locus, that's the position of the genes within the chromosomes. Now let's talk about homozygous allele and heterozygous allele. So from homozygous allele we are getting the word homozygote. होमोजाइगोट इज कि अगर किसी एक करेक्टर से रिलेटेड a person is having both alleles as same or similar to each other, then that is called as homozygote. ठीक है. So बेटा अगर देखो, if you have 2 alleles are there, one is saying have a blue eye, another is saying having green eye. Now blue eye is dominant, so person will get
blue eyes, but that person is not homozygote, that is heterozygote, है ना, क्योंकि वो पर्सन जो डाउन द लाइन व्हेन इट इज पासिंग द जीन्स टू द ऑफस्प्रिंग, इट कैन पास बोथ द कलर्स, इट कैन पास ब्लू, इट कैन ऑल्सो पास ग्रीन, क्योंकि वो हेटेरोजाइगोट है, उसके पास दोनों एलील हैं. होमोजाइगोट, it's an organism with identical pair of allele for that particular trait. ठीक है, तो होमोजाइगोट में क्योंकि उसके पास आइडेंटिकल एलील्स है, तो वो अपने ऑफस्प्रिंग में भी एग्जैक्टली सेम एलील पास करेगा. इट विल बी गारंटेड कि जो डोमिनेंट एलील है अगर वो होमोजाइगोट है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा दैट विल आल्सो हैव द सेम फीचर्स. ठीक है, so a person with, let's say, blonde hair. Now blonde is dominant over black which is recessive, but blonde में अगर आप DNA चेक कर रहे हैं, you are finding कि जो hair color चेक करने वाले एलील्स हैं वो दोनों सेम हैं, तो that person is homozygote and that person offspring will definitely have blonde hair, right? And the for same reason we call these homozygotes as purebred. ना purebred का मतलब है अगर एक pea हम लेते हैं and it's having round seed and it is homozygote. Now round is dominant over wrinkle seeds. तो purebred का फायदा ये है कि हमें 100% गारंटीड है कि डाउन द लाइन जो सीड पैदा होंगे वो हमारे राउंड सीड्स ही होंगे. ठीक है, दैट इज होमोजाइगोट हैविंग सेम सेट्स ऑफ एलील. अगर यहाँ पर देखेंगे बेटा हम, तो यहाँ पर आपके पास जो एलील है दैट्स कैपिटल बी, हियर आल्सो इट्स कैपिटल बी. नाउ कैपिटल बी इज डोमिनेंट, सो दिस इज डोमिनेंट homozygous, and in this case this will be homozygous recessive, right? I hope this homozygote is clear. From the same we can get the word heterozygote. So heterozygote is opposite of homozygote, that is it is having both the sets of alleles where one is dominant and another is recessive. तो जो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स है तो इसमें आपका जो है वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑफस्प्रिंग जो है वो उसको जो है यू कैन पास दिस डोमिनेंट एलील ऑल्सो एंड रिसेसिव एलील ऑल्सो. So these heterozygotes are also called as hybrid, right? So when you are getting a dog, so it can be either purebred or hybrid. So purebred means that from generation to generation it's the same species of dog is there, and when you talk about hybrid then it's from the mixed species that particular dog is obtained. Well, next few terms are the terms which are used by the Mendel. So in the Mendel experiment he took two flowers of purebred and he crossed between them. Now purple being the dominant and white is recessive, thus the first offspring which came out was a purple color. Now this is a hybrid is there, and this hybrid or the first offspring is called F1 generation and the parents were called as P generation, right? And after the crossing between the flowers of this hybrid generation or the F1 generation, the next generation which was obtained were again showing the traits of purple flower and white flower, and this second generation is called as F2 generation. So we'll define these three terms: P generation, F1 generation and F2 generation. So let's define these three terms. P generation we have seen is nothing but parental generation or the first sets of parents which are being crossed, right? After they are crossed, then the first generation is obtained or first filial generation is obtained. So what is F1 generation? F1 generation is generation of hybrid, because the P generation they were having different sets were there. They were dominant homozygote and recessive homozygote. So F1 what we are obtaining is not a purebred, but that's a hybrid generation is there.
so which is being produced by crossing between the parental generation, right? Parental generation are also different from each other genetically. And this F1 generation is also called as first filial generation or son and daughter generation, right? So once this first offspring is obtained, this is your hybrid and this is F1 generation. And once this F1 generation is self crossed, then the next generation obtained is F2 generation. So F2 generation or second filial generation is a generation which is developed as the result of breeding of F1 generation species, right? So when you are doing cross between the F1 generation, then the next generation which is obtained is F2 generation. And we'll see in Mendel experiment how he was surprised that F1 was all purple flower was there, but when he did cross between F1 generation, then the white flower again turned up, and that experiment is what led him to genetics, and we'll discuss that in detail in other videos. Let's see this next very important term, that is monohybrid cross. So the word mono means single, right? So अगर आप एक सिंगल करेक्टरिस्टिक्स को लेकर आप क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और यू कैन से अगर आपने राउंड पी एंड रिंकल्ड पी, है ना, सिर्फ इसी करेक्टर को ले रहे हैं आप, कलर या प्लांट की हाइट, यू आर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग एल्स, then the cross between them will be monohybrid cross. Only thing is जो आप round P लेंगे that has to be purebred or homozygous, and जो wrinkled P होगा that should also be purebred. They should not be basically hybrid, right? Both of the characters should be purebred. So what is monohybrid cross? So it's a cross in which we obtain a hybrid from two individuals with homozygous genotype. That is important. That is, the cross should be done between true breeds, है ना, प्योर ब्रीड के बीच में क्रॉस होना जरूरी है, and only one particular trait is what we are considering. So for homo hybrid cross, two things are important. One is only one trait will be considered. Another is that the parent or P generation should be of purebred and different genotype. Or we can say that monohybrid cross is cross between dominant homozygote and recessive homozygote. So capital B getting crossed with small b. So if alleles are capital B and small b, then the xenotypes, जो possible xenotypes हैं वो capital B and small b, those will be your homozygote. और इनको क्रॉस करने पर जो हमें मिल रहे हैं, है ना, those are your heterozygotes we are getting. So you see here you have doing cross between pure breeds, and what you are getting here is hybrid or heterozygote is what you are getting. This is your P generation, parental generation, and this what you are getting here is F1 generation. So next is monohybrid ratio. So monohybrid ratio, beta, we have seen this कि जब आप when you are crossing between two parents of homozygous, so what you are getting is all the generations, the first generation everyone is same, that is hybrid is there, everyone is purple in color, right? But when you do a crossbreed between this F1 generation, तो जो F2 generation obtained हो रही है ना, उसमें जो रेशो होगी between the purple color and white color, or between the dominant and recessive, that ratio is what we call as monohybrid ratio. So monohybrid ratio is phenotypic ratio of different individuals which are occurring in F2 generation.
ठीक है। तो F2 जनरेशन में जो आपका रेशो, जिस रेशो में वो अकर कर रहे हैं, कौन, जो पर्पल एंड वाइट फ्लावर अकर कर रहे हैं, उस रेशो को वी कॉल इट एज मोनोहाइब्रिड रेशो। ठीक है। तो एक करेक्टर को लेकर अगर आप होमोजाइगस के बीच में क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन जो है दैट विल बी ऑफ डोमिनेंट जीन, है ना, सारे के सारे ब्लू फ्लावर हैं। बट जब आप फर्स्ट जनरेशन को वापस क्रॉस कराते हैं, सो व्हाट यू गेट इज अ ब्लू प्लस वाइट फ्लावर्स अगेन, है ना, पर्पल एंड वाइट फ्लावर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, एंड दैट कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज बी इन रेशियो ऑफ 3:1, and this 3:1 phenotypic ratio is what we call as monohybrid ratio. So monohybrid ratio is a phenotype ratio and it is 3:1 in case of monohybrid. We'll see in dihybrid what this ratio is, but first this 3 is representing the dominant character, dominant trait, and 1 is representing the recessive trait. ठीक है। अब अगर मेंशन नहीं है तो मोनोहाइब्रिड रेशियो में वी हैव टू राइट फिनोटाइपिक रेशियो, बट समटाइम्स इट्स मेंशन, सो मोनोहाइब्रिड जेनोटाइप रेशियो। अब जेनोटाइप रेशियो में बेसिकली आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स देख रहे हैं, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं, या तो ये बीबी है, कैपिटल बी और कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, है ना, और थर्ड टाइप कौन सा मिल रहा है हमें, स्मॉल बी, और ये किस रेशियो में मिल रहे हैं, 1:2:1। Thus a monohybrid genotypic ratio will be nothing but 1:2:1, that is of you can say homozygous, capital B is homozygous dominant is to heterozygous is to homozygous recessive, right? This small b is homozygous recessive. So I hope this monohybrid ratio is clear. Next we'll take is dihybrid ratio. Let's take the next term, that is dihybrid cross. So dihybrid cross is same as what we did in monohybrid cross, but यहाँ पर हम एक करेक्टर को ना लेकर दो पर्टिकुलर ट्रेड्स की हम बात करेंगे, है ना। तो पहले हमने बेटा राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड, ये एक पर्टिकुलर ट्रेड लिया था, but now we'll take two traits, means round and yellow, wrinkled and green. तो ये दोनों ट्रेड से रिलेटेड हम प्योर ब्रेड को लेंगे और उनको क्रॉस करेंगे, एंड देन विल सी व्हाट रिजल्ट वी आर गेटिंग। सो डाइहाइब्रिड क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स with homozygous trait और genotype of two different traits। ठीक है। तो पेरेंटल जो है उनके पास होमोजाइगस जेनोटाइप होना चाहिए और एक नहीं दो ट्रेट्स का, जैसे राउंड एंड येलो एंड अगेंस्ट रिंकल्ड एंड ग्रीन, सो दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। सो कैपिटल वाई इज रिप्रेजेंटिंग योर येलो, दैट्स pure bred of yellow, and round, this is pure bred of green and wrinkled. So we'll see when you are crossing these two together, then the result we get is of a dihybrid cross. तो ये आपको जो मिल रहा है, this is your parents are there, P generation, and here this is your first filial generation or F1 generation. अगर आप F1 जनरेशन देखेंगे तो F1 जनरेशन इज आइडेंटिकल, इट्स अ हाइब्रिड एंड आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस आई होप इज क्लियर। तो डाइहाइब्रिड रेशो, उसमें फिर हम F1 जनरेशन की कभी बात नहीं करते ना, क्योंकि F1 जनरेशन सारी सेम आइडेंटिकल है। विल टॉक अबाउट F2 जनरेशन की जो सेकेंड जनरेशन आएगी, इनको क्रॉस करके, है ना, सेल्फ पॉलिनेट और सेल्फ क्रॉस करके जो जनरेशन आएगी उसकी रेशो क्या होगी। So let's take the next term as dihybrid ratio. So before taking that dihybrid ratio terms, let's see what exactly is happening. So यहाँ पर बेटा आपने क्रॉस किया, and this cross is P generation which is homozygous in two traits, और इनको जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है, that is all are identical to each other
and that's a hybrid is there, it's heterozygous is there. अब इस जनरेशन के जो आपकी गैमीट्स बनेंगे, है ना, उन गैमीट्स में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विल बी पॉसिबल. तो वो जो कॉम्बिनेशंस होंगे दैट विल गिव यू F2 जनरेशन. ठीक है, तो यहाँ पर जो गैमीट्स बन रहे हैं दोज गैमीट्स विल बी कैपिटल R कैपिटल Y और कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, है ना. दीज गैमीट्स आर पॉसिबल. अब इन गैमीट्स से ही आगे की F2 जनरेशन बनेगी, और इन गैमीट्स को जब आपस में आप क्रॉस कर रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशन आ रहा है आपका, दिस Punnett स्क्वायर इज शोइंग ऑल द कॉम्बिनेशंस पॉसिबल. अब यहाँ पर जो आपका कैपिटल R एंड कैपिटल Y, राइट, दोज आर डोमिनेंट. तो कैपिटल Y जो है वो येलो है एंड कैपिटल R इज राउंड. तो 9 जहाँ पर भी कैपिटल R कैपिटल Y है, दोज पर्टिकुलर सीड्स आर गोइंग टू बी राउंड एंड येलो. So you can count this are 9 yellow and round seeds are there. Same way जहाँ पर आपका बेटा कैपिटल R मिसिंग है तो वो wrinkled seeds होंगे, और अगर कैपिटल Y भी मिसिंग है तो वो wrinkled and green seeds होंगे, है ना. तो इनको जब आप काउंट कर रहे हैं तो द रेशियो यू आर गेटिंग इज 9:3:3:1. और ये रेशियो कौन सी है? दिस इज ऑफ फिनोटाइप. तो डाई हाइब्रिड में जो F2 जनरेशन है उसकी जो फिनोटाइप रेशियो है दैट इज 9:3:3:1, where 9 is representing yellow and round and other 3s are representing yellow wrinkled, green round, and that 1 is your green and wrinkled. Green and wrinkled both are recessive, and out of total 16 offsprings only one will have wrinkled and green seeds. So we have already discussed what is dihybrid ratio. So dihybrid ratio is a ratio of F2 generation which is obtained when you are doing dihybrid cross between two parents, है ना. अगर dihybrid cross करेंगे तो उसमें जो phenotype ratio होगी that ratio will be called as dihybrid ratio, and that is 9:3:3:1. And if you are interested in genotype ratio, तो बेटा genotype ratio is the ratio of genes, है ना, जो different type के genes हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं. अगर आप देखेंगे कैपिटल R एंड कैपिटल Y सिर्फ और सिर्फ एक ही जनरेशन है इस रेशियो में. कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y 2 are there with these particular genes, है ना. Then again small r capital Y only one gene is there. This type of genes capital R capital Y small y, these are 2 genes are there. तो इन genes की अगर आप रेशियो लेंगे, the ratio of that genes is what is genotype ratio is there. Right? If nothing is mentioned in the question, then you are supposed to write phenotypic ratio. तो यूजुअली मोनोहाइब्रिड रेशियो तो बहुत आराम से याद हो जाती है ना. फिनोटिपिकली इट इज 3:1 एंड जेनेटिकली और जीनोटिपिकली इट इज 1:2:1. और डाईहाइब्रिड रेशियो थोड़ी सी लंबी है तो, लेकिन उसको याद करने का बहुत इजी तरीका है. दैट इज डाईहाइब्रिड रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज स्क्वायर ऑफ मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ F2 जनरेशन. तो मोनोहाइब्रिड रेशियो हमारी कितनी है बेटा? अगर फिनोटिपिकली बात करेंगे तो फिनोटिपिक द मोनोहाइब्रिड रेशियो इज 3:1. इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट मीन्स 3:1 इंटू 3:1, है ना. तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? 3 इंटू 3 इज 9, देन 3 इंटू 1 इज 3, 1 इंटू 3 इज 3 एंड 1 इंटू 1 इज 1. सो यू विल गेट योर 9:3:3:1, है ना. The same you can apply on genotype also. तो genotypic is for dihybrid ratio. Genotypic dihybrid ratio of F2 generation is square of monohybrid ratio. Monohybrid ratio 1:2:1 है. इसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे,
है ना। इसको एल्जेब्रिकली जब आप ओपन करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज, हियर इट इज 1 into 1 is 1, then this will give me 2, then this again is 1, this is giving me 2 4 2। तो एल्जेब्रिकली आप जब ओपन करेंगे यू विल गेट डाइहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो। Let's discuss this same dihybrid ratio again with one more example. So if I have taken two cat, they are differing, the different traits are the color of their fur, one is white and one is brown, brown being the dominant one and white is the recessive one. And the other feature is the tail, this is short tail and this is long tail. And if you will see, short tail is the dominant feature and long tail is the recessive feature. तो अगर आप इन दोनों के बीच में क्रॉस करेंगे, है ना, तो पहले तो ये देखें कि हम दो ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो डाइहाइब्रिड हो गया एंड प्लस दे आर होमोजाइगस। तो इनका अगर हम क्रॉस करेंगे, सो क्रॉस में हमारे पास जो 4 ऑफस्प्रिंग्स आ रही हैं यहाँ पर, सारी की सारी ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी, है ना। उनका जो डोमिनेंट फीचर है दैट इज द ब्राउन कलर, तो ब्राउन फर विल बी द डोमिनेंट एंड एवरीवन विल हैव ब्राउन फर, एंड द शॉर्ट टेल is the dominant feature, so we'll have brown cat with short tail in all of them, right? Now यहाँ पर ये F2 F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन अगर सेल्फ क्रॉस करेंगे, एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे, so what we'll get is the F2 जनरेशन। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं when they are crossing with each other what we are getting here। तो जब ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं बेटा, इनकी जो गैमीट्स बनेंगी, है ना, अगर यहाँ पर देखेंगे जो गैमीट्स बनेंगी वो कौन कौन सी गैमीट्स बन सकती हैं हमारे पास, S, कैपिटल S एंड कैपिटल B, कैपिटल S एंड स्मॉल b, स्मॉल s एंड कैपिटल B, स्मॉल s एंड स्मॉल b, ऑल दीज गैमीट्स आर पॉसिबल, है ना। और हर कैट में ये गैमीट्स बन रहे हैं, एंड ये जो एग्स एंड स्पर्म्स है ना, दिस व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, देन द डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, दोज ऑफस्प्रिंग्स आर योर F2 जनरेशन। और इन F2 जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो ब्राउन कैट विद शॉर्ट टेल है, दोज आर 9 इन नंबर्स, एंड देन यू हैव गॉट white cat with short tail, those are 3 numbers, then you have got brown cat with long tail, so those are again 3 numbers, and from the recessive genes the white cat with long tail, that is only 1 in number, and this ratio is phenotypic ratio for dihybrid cross. Let's take the another term, that's Punnett square. This one I have used many times in explanation. So Punnett square is nothing but it's a square which is, or a grid which is used to indicate all the possible outcomes in a hybrid or genetic cross। ठीक है, तो जेनेटिक क्रॉस में आप सारे के सारे जो आउटकम्स हैं, उन आउटकम्स को शो करने के लिए जो ग्रिड और स्क्वायर आप यूज कर रहे हैं, उसका फैंसी नेम है प्यूनेट स्क्वायर। तो बेटा ये हाइब्रिड की वजह से जो है, ईच ऑफस्प्रिंग दे गेट डिफरेंट ट्रेट्स आर देयर, एंड दिस डिफरेंस इन characteristics and traits which are there in particular species is what we call variation। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन। तो जिससे कि अगर आप एक प्योर ब्रेड डॉग लेते हैं, दैट इज मोर ससेप्टिबल टू गेट सिक। एक जो हाइब्रिड डॉग है, दैट हैज गॉट मोर चांस फॉर अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, सो ये जो वेरिएशन है, दिस इज सीन इन एवरी स्पीशीज, राइट। When you talk about humans, so we have got humans with different skin colors, different hair colors, all are of same species, but this variation is there, and this variation is necessary for the part of evolution। Variation जो है वो mainly 2 reason से होते हैं। पहला जो reason है, that is crossing over during meiosis। तो meiosis में before division when the chromosomes are overlapping,
तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो कुछ जीन्स जो हैं दे इंटरचेंज एंड दैट्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। एंड सेकेंड रीज़न इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में बेटा जब आपका क्रोमेटिन और डीएनए डुप्लीकेट करता है अपने आप को, तो ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इट्स डुप्लीकेटिंग समटाइम्स दैट एटीसीजी की कॉपीज जो हैं वो प्रॉपर नहीं बनती हैं, देयर इज सम changes happen, and that change which is happening is called as mutation. And let's see the crossing over. So in crossing over during meiosis, when the chromosomes are homologous chromosomes are lying at the center, so before they are being attached to the spindles, they exchange some amount of genes between them, and this exchanging of genes is what cause variation. And that's complete our all the terminology related to this particular chapter, and in the next video we'll discuss about different experiments and laws given by Mendel. I hope you enjoyed the videos. Keep watching.